So here we get started with financial accounting. Financial accounting is one of the most मोस्ट डन सब्जेक्ट ऑलरेडी. ज्यादातर स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी करके आते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करके आते, जो कम्प्लीटली साइंस स्ट्रीम से आते, और फिर उनको ये पढ़ना है अकाउंटिंग. तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि सर हम लोग साइंस स्ट्रीम से है और हम लोग को अकाउंटिंग नहीं आता, हमको अकाउंटिंग पढ़ना है. वो अकाउंटिंग कैसा पढ़ना है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहता है. वो सबसे बड़ा चैलेंज को दूर करने के लिए they need to be doing, or what you guys need to be doing, अगर आप कॉमर्स में वीक है, so you should be starting from the बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से शुरू करना है आपको. अब बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो है कैसा करेंगे, हाउ डू वी डू दैट. once that comes we are going to do the basics of accounting, जो टी टेबल, जर्नल एंट्रीज जो होती है, जब हम पढ़ने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा और स्ट्रेस करूंगा उस वक्त पे. so you need to invest a lot of time in practicing that if you are not having any basics of accounting. वहां पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा. सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट के ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम बनाते क्यों हैं, क्या इसकी जरूरत है. थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से, जो अभी अभी हम पढ़े हैं. जैसे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज है. कैन समवन जस्ट रीड इट. कैन यू रीड इट. नहीं, ऊपर वाला है. Businesses exist to make a profit by producing and selling goods and services. Profit is the difference between the income and expenses of a business. While businesses share a similar purpose, they can still differ significantly. Businesses vary in terms of size, financing, and legal positions. These different factors influence what is reported in the financial statements. A business can operate as a sole trader, a partnership, or a लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. ओके, तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज है, और हर बिजनेस एंटिटी को अकाउंटिंग की जरूरत है. एवरीबडी नीड्स accounting and understanding of their particular accounting in their senses. So exam advice questions on these business arrangements are popular in the exam. Students may be tested on the ability to recognize the key features of each type of business as well. Then sole traders. Sole traders कौन है, अभी बोला था ना मैं, शटर बिजनेस. खुद से ही शटर खोलते, सब काम काज करते, पहले शटर खोल के साफ सफाई करके बैठ जाते गले पे, फिर सब कलेक्शन करके पैसा जेब में भर के वापस शटर बंद करके चले जाते. दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, अ पर्सन हु डज ऑल द बिजनेस टुगेदर. तो लेकिन उसकी जो अकाउंटिंग होती है, वो अकाउंटिंग किस फॉर्मेट में करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वी विल बी डूइंग इट. क्यों, क्योंकि एक कंपनी की अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मेट्स फॉलो कर रहे हैं, और जब एक सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब थोड़े सेक्शंस उसमें नहीं रहते. जैसे कि कंपनी की अकाउंटिंग जब आप कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स का कितना शेयर है उसके ऊपर थोड़ा हम लोग स्ट्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर का कुछ नाम है क्या, खुद ही है. द पर्सन इटसेल्फ इज अ शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्यून, एटसेट्रा, एवरीथिंग वही आदमी है. देन बिजनेस कंटिन्यूएशन, टैक्सेशन, ओनरशिप ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, लीगल एक्शन, ये सब चीजों को देखना पड़ता है. लीगल डिफरेंसेस बिटवीन अ सोल ट्रेडर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस व्हिच आर देयर अवेलेबल. अब सोल ट्रेडर्स का एडवांटेज क्या है, वो कंट्रोल, फॉर्मेलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी सब उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में ही रहता. अब जैसे कि आप मेरे को बोलो कि सर सुबह सुबह उठ के आना नहीं हो रहा, जमाया आ रही, सारे अंगाया आ रही, अपन आफ्टरनून में रखेंगे क्लास, अच्छा फ्रेश बशाश होके आते हम लोग. मैं बोलता ओके फाइन, क्यों, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है. फिर किसी दिन आप थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, सर दिन में क्या रखते सर, दिन में जो सूरज आता धूप रहती, क्यों अपन दिन में रखेंगे क्लास, रात में रख लेंगे अपन लोग. हाँ, क्या है, रात में रख लेंगे क्लास, और सुकून से नाइट आउट भी हो जाता अपना, कैसा भी जो सो रात में जग के हम लोग रील स्क्रॉल करते, वो टाइम पे हम ना पढ़ लेंगे, सुबह में सो जाएंगे, कैसा भी सोने का रहता बोल के. तो उसको भी मैं हाँ ओके ये भी कर सकते बोल के बोल सकते, क्यों, क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल है. लेकिन ऐसा बोलेंगे क्या आप लोग, बोलेंगे, यस बोल रहे हैं यासीन तुम, ओके. अब डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडर, लायबिलिटी पूरी सोल ट्रेडर के ऊपर ही रहती है, पैसे खुद से ही लगाना पड़ता, बिजनेस को कंटिन्यू करते अपना ही काम करना रहता. हु हैज टू डू दिस, अ सोल trader has to do everything by its own, and that's a disadvantage.
Now here you have some questions for you. Which one of the following is most likely to be interested in a sole trader's financial statements? Shareholders, the financial press, the loan note holders, या फिर the tax authorities. And then the next question is, which of the following statements about sole traders are true? Answer आप मुझे बोलिए मत, लिखिए. I don't want you to give out answers, क्योंकि आप आंसर गिव आउट करेंगे फिर मैं भी आपको गिव आउट कर दूंगा आंसर. So that does not make sense. So you write down the answer and then let's break that suspense. Which of the following statements about sole traders are true? A sole trader may be able to obtain a bank overdraft. If a sole trader owes money, the person who is owed the money will only be able to claim against the assets of a sole trader's business. A sole trader's business may suffer if the owner becomes ill. ये थोड़ा relatable question हो गया second. First वाला I am looking out for answers. First वाला आंसर लिखिए आप लोग. Everyone. Second one. ओवरड्राफ्ट बोलते हो आपके अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए भी निकाल लिए और एक 50,000 भी आप निकाल लिए बैंक से एक्स्ट्रा माइनस में, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है सो करंट अकाउंट पे है तो अवेलेबल देते हैं वो लोग. समझ लो क्रेडिट कार्ड की तरह. आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी वो लोग पैसे देते हैं आपको. लोन नहीं बोलते उसको, ऐसे खाते खर्चे के लिए निकाल लेते हैं. अरे भाई अभी नहीं है 50,000 निकालो उसका फिर डाल दो, उसका चार्ज लेते हैं वो लोग क्रेडिट कार्ड की तरह. डन. सेकेंड वन ऑल्सो डन. Nakhil, you're done. Those who are there online, I hope you guys have put down your answers as well. Done. Shall we see the answer? Number one is tax authorities, and number two, what it is? 1 and 3. बताओ क्या क्या लिखे हैं. सेम. क्या है आंसर फर्स्ट वाले का? ये क्या था? शेयर होल्डर्स रहते इसमें अब भी बोला ना मैं. शेयर होल्डर्स नहीं रहते, फाइनेंशियल प्रेस क्यों आएगा आपके पीछे? लोन नोट होल्डर्स भी नहीं रहते. लोन नोट का मतलब बेसिकली आप जिसको लोन दिए. अपन सोल ट्रेडर है कि अपन किसी को तो भी लोन दे सकते हैं यार. मतलब हाँ लॉजिकली सोचो. आंसर होगा टैक्स अथॉरिटीज. टैक्स अथॉरिटीज इज द आंसर. आप क्या लिखे? आउट. दोनों करेक्ट है. मैं करेक्ट है दोनों. सेकेंड वाला क्या करें आप? ओनली वन. सॉरी 2 and 3. आप दोनों तो गलत नहीं करे ना. ठीक है. आप क्या लिखे सेकेंड वाला? 2 and 3. ये याद रख लो कभी भी जब ऑप्शन में ये आता है, ये वर्ड आता है ओनली, when this comes in the option, ज्यादातर वो ऑप्शन आउट हो गया आपका. क्योंकि वो स्पेसिफाई कर रहा. देखो इफ अ सोल ट्रेडर owes money, the person who is owed the money will only be able to claim against the assets. भाई only भी नहीं, उसको पैसे मिल सकते. खाली एसेट से पैसा मिलना नहीं, उसको पैसे मिलना जरूरी.
समझे? तो वो दैट ट्रिक, ओके, लेट्स मूव अहेड. पार्टनरशिप्स. Legal differences of partnership. All partners agree to a new partner being admitted. Change in that business continuation है. Taxes on personal income की तरह ही लेते ही है. Ownership of business property. All others are no. There is no separate ownership of thing. Sole proprietary में जैसा होता है इसमें भी वैसे ही होता. Legal action. The partners are legally liable for any penalties, fines, etc. उन्हीं के ऊपर. एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, थोड़ा सा स्किल्स नॉलेज एक्सेट्रा अच्छा हो जाता, स्पेशलाइजेशन आ जाता उन लोग में, डिफाइंड रोल्स, रेजिंग फाइनेंस, पेपर वर्क सही हो जाता, स्किल्स नॉलेज एवरीथिंग विल बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. क्यों स्ट्रक्चर्ड मैनर में? क्योंकि हर एक को एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाती है. अब एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कितने पार्टनर्स रहते हैं? 5-6 पार्टनर्स तो रहेंगे. हर एक की जिम्मेदारी एक हो गई कि यू डू दिस वर्क, यू डू दैट वर्क, यू डू दिस, यू डू दैट. इजी हो गया काम. लेकिन जब लायबिलिटी की बात आती, सब लोग लायबल है. एवरीवन इज लायबल देन. रेजिंग फाइनेंस, पेपर वर्क, स्किल्स एंड नॉलेज, risk. I want you guys to make note of this. Not only this, even the disadvantages. Disadvantages में क्या है? लड़ाई झगड़ा होता, लड़ लेते हैं वो लोग. बॉक्सिंग वाला नहीं लड़ते हो ना, सही में लड़ लेते हैं. हाँ, कभी बहस कर लेते हैं, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते. क्या बोलते हैं उसको? ना इत्तेफाकियां हो गए, या और क्या बोल सकते हैं उसको? थोड़ा और है बात ना, लेकिन मैं अभी क्लास में नहीं बोल सकता हूँ. जस्ट मेक नोट ऑफ दिस. That made a note of advantages and disadvantages of partnership. Done. तो अब बताओ मेरे को क्या है डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप के?
What are disadvantages of a partnership? प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, पार्टनर का प्रॉफिट शेयर करना पड़ता, प्रॉब्लम। डिसीजन मेकिंग टाइम लगता है, ओके। डिसएग्रीमेंट्स, यस, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कोलिजन ऑफ थॉट्स, यस, डिसएग्रीमेंट्स, कोई कुछ बोलते हैं और कोई कुछ और, यस, इट इज टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग टाइम कंपनी। तो उसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती, इट्स नॉट अनलिमिटेड इन दैट, जैसे कि पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। यहाँ पे यू आर लिमिटेड टू द लायबिलिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विच यू हैव बीन कमिटेड फॉर, ओके। नाउ कैन समवन जस्ट रीड this from here, change in business ownership? Aun, can you read it louder from there? Change in business ownership. Shareholders can buy and sell shares in a limited liability company without needing other shareholders to agree. However, smaller companies can restrict the sale to make the shares available to existing shareholders before being placed on the open market. एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा डिफर हो जा रहा है यहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच से, यहाँ पर आए जब तक। एंड देन अ बिजनेस कंटिन्यूएशन, यस, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस। टैक्सेशन, यू आर लायबल एज अ कंपनी, इट्स अ सेपरेट एंटिटी, इट्स अ सेपरेट एंटिटी, इट्स नॉट द सेम थिंग। जैसे कि पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही रहता, okay। Ownership of business property, ownership does not need to be in anyone else's name, individual shareholders do not have control over the property, वो कंपनी के नाम पे ही रहती प्रॉपर्टी। देन लीगल एक्शन, the legal repercussions of a liability company are limited to the business only, the owner shareholders liability is limited towards only which he has committed to। सीधा उसके घर पे आके उसका घर का सामान नहीं लेके जा सकते, लेकिन सोल प्रोप्राइटर का यस लेके जा सकते। अब जैसे कि देखो, मेरा एक दोस्त है विजू, विजू को जानते हैं आप लोग? विजय यारो, विजय माल्या, विजय माल्या के घर पे मतलब पैसे डुबा दिया ना भाई उन्हें लोगों के, तो उसके घर पे जाके कुछ सामान ले सके वो लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है भाई। ऐसे उसके घर पे घुस के, अरे तुम्हारा ये वास अच्छा दिख रहा है, ये 1 करोड़ का है, ये पेंटिंग है, ये लेके ये बेच के पैसों दे देंगे लोगों को, नहीं कर सकते। But he as individual he is trying to do everything to give back the money। उसके ट्वीट्स आते ही रहते हैं ना कि I'm going to give back money people, but the point is because it is a limited liability company they cannot। now advantages of limited liability companies and disadvantages of limited liability companies। एडवांटेज क्या है? मेरे दोस्त विजय को तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिल गया, मतलब जेल में तो नहीं है ना भाई उन्हें, तो जो करना है कर रहा हो अपनी जिंदगी में। अब थोड़े दिन जाने दो, देखो 70 साल का बर्थडे बैच होने वाला है, इनवाइट करा उन्हें किसी को इसमें से? मेरे को तो नहीं आया इनवाइट, क्योंकि अब जो है सो प्राइवेट पार्टी होने वाली है। लास्ट टाइम 60 ईयर्स का करके जो है सो बहुत बड़ा धूम धड़ाका हो गया उधर, इस बार खामोशी से होने वाली है, ठीक है। मैं बता देता हूँ लेकिन कब है, गूगल कर लो आप लोग। खैर, advantages and disadvantages of limited liability companies, please make a note of this।
डन। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, बताओ क्या एडवांटेजेस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के। एडवांटेजेस। हम्म। ओके, नेक्स्ट। लायबिलिटी लिमिटेड है, ओके। और business continuation. Those who are there online can also answer. I'm here to hear you. अच्छा ठीक है, चलो डिसएडवांटेजेस बताओ। ओके, टैक्सेशन सीधा फ्लैट पे करना पड़ता है उनको। कॉस्ट। ओके। ओके, पीपल्स व्यू। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में ज्यादातर लोग देखते भी अपने को, फाइन। ओके, so now let's just go on towards another activity. Yeah, this one looks great. So match each statement of the appropriate business arrangement. You can, you know, right? Sole traders, partnership, limited liability company. ये तीन ही है. Sole traders, partnerships, limited liability companies. Answer it. ऊपर क्या ऑप्शन देखना है क्या? Sole traders, partnerships, limited liability companies. LLC. Sole traders, partnerships, LLC. Sole traders, partnerships, LLC. Done, लिख लिए? Now I am expecting correct answers from you. डन। कितने बाकी है? तीन स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के, ये कौन से स्ट्रक्चर में बैठते हो लोग?
let's go one by one. बताओ first वाला. Isabella wishes to open a small shop 3 days a week and wants to spend as little time as possible on business paperwork and formalities. What type of business arrangement is this? पार्टनरशिप कैसा हो सकता है? इसाबेला के साथ है कौन? और अकेली है ना वो? ठीक है, चलो ये पॉइंट रखेंगे आपका. A business will continue even if one of its shareholders dies. Limited liability company. Okay. Okay. There is a distinction between business and its owners. LLC. LLC. Partnership. नखिल. नखिल क्या लिखे तुम? Partnership लिखे. Oliver wishes to have its own business in a country where limited liability companies must have a minimum of 2 shareholders. Okay. Riley wishes to operate by himself as a builder but not concerned that he will be personally liable for legal claims by his customers. Cha. Lee has been running an accounting practice by herself but is concerned that she does not have the expertise to meet all her clients' needs. The business is taxed as a distinct entity from those who own it. The business may be subject to a different tax rate from its owners. LLC. The owner's savings are likely to be essential business finance source. अब देखेंगे आप लोगों को कितने सही आए कितने गलत आए. ट्रेडर. सेकंड वन इज एलएलसी. पार्टनरशिप नहीं हो सकता भाई वो. तुम पार्टनरशिप लिखना सेकंड वाला. शेयर होल्डर की बात हो रही. पार्टनरशिप में शेयर होल्डर कहाँ रहता? पार्टनर रहता वहां पर. सवाल में ही आंसर था. उन्हें पार्टनर रहता, शेयर होल्डर नहीं रहता वो. शेयर होल्डर एलएलसी में ही रहता या फिर कंपनी में ही रहता शेयर होल्डर. डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर्स एलएलसी. आप लोग क्या कर रहे थे? पार्टनरशिप लिखे थे क्या? Oliver wishes to have its own business by country limited liability to shareholders, sole trader. याद रखो, wishes to have its own business in a country where limited liability company must have minimum 2 shareholders. Wishes to have. Okay. Then Riley wishes to operate. Wishes to operate as a person जहां पे उसका claim कुछ नहीं होना. So that is LLC. Lee has been running an accountancy practice by herself and she does not have the expertise to meet all the client needs. So what she wants to get into is partnership. यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो. देखो ये some statements will be scenarios where the owner considers what business arrangements to operate, considering के कहाँ काम करना चाहिए. तो अगर सपोज उसके पास ये देखो, he does not have this expertise and then wants that expertise, then to get that expertise he should get into partnership, which he is in already is sole proprietorship, but where he wants to get into is partnership. The business is taxed as a distinct entity from those who owns it and may be subject to different tax rate as LLC. Owner's likely savings are from his own savings, investments, then it is sole trader. तो ये लास्ट के दो तो सही है. ये वाला. Lee has been running an accountancy practice. Riley wishes to operate a business. Oliver wishes. ये जो तीन है ना, ये तीन questions, these 3 questions are something which is challenging. मतलब ये wordings पे challenging हो सकते. So you should be aware on understanding that. ठीक है? Let us move ahead now.
definition of financial reporting, recording, analyzing, summarizing of financial data. अब I want Ahad to read this. Recording क्या होता? A bookkeeper records all business transactions promptly so the information is updated. The record should show enough information about each transaction to enable the correct categorization of the transaction for the purpose of preparing financial statement to meet needed requirements. For example, a business records information such as customer sales and purchases of goods. Many transactions may be recorded automatically by computerized recording accounting system. For example, in a retail store, as barcodes of the products are scanned at checkout, details of sales and inventory movement are automatically recorded. ठीक है, ये बस खाली रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो कैसा भी करो, either we record it through direct accounting software, or we do it on Excel, or we just write it in a book. That's recording for us. Then further going, analyzing is sorting the transaction into appropriate categories. I want you guys to write it down. ये थोड़ा important है, लिखो recording, हर थोड़ा ज्यादा लिखना जरूरी है. Recording, okay. रिकॉर्डिंग के अंदर क्या करना, बुक कीपर लिख लो खाली शॉर्ट में. ही इज रिकॉर्डिंग ईदर इन बुक, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और सम प्लेस फॉर हिज ओन रेफरेंसेस. ठीक है. देन एनालाइजिंग, he is sorting all the transactions, categorizing it, sorting and categorizing all the transactions. देखो एनालाइजिंग में, एनालाइजिंग में he is sorting all transactions to appropriate categories, sorting and categorizing all the transactions. फिर आता है summarize. Summarizing all the transactions. सबके अंदर अकाउंटिंग फंसा हुआ है, मतलब जैसा हम रिकॉर्डिंग के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर पूरी अकाउंटिंग हो जाएगी. फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पूरे एनालिसिस कर रहे हैं. डन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग. ओके, इसी के अंदर पूरी अकाउंटिंग हो जाती है. अगर समझ गए तो ये सब कुछ अकाउंटिंग है, लेकिन और बहुत ज्यादा इन डिटेल्ड है ये. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई वांटेड यू गाइस टू राइट इट डाउन. देन नेचर एंड प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं, किसको समझाने के लिए बना रहे हैं. जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा हुआ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज नथिंग बट बैलेंस शीट. वो होता कैसा है, लाइक फ्यू डेज बैक आई एक्चुअली डाउनलोडेड एप्पल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
जैसे कि देखो ये एक एनुअल रिपोर्ट है, रियल टाइम एनुअल रिपोर्ट है. लेट्स सी इफ वी आर एबल टू गेट इनटू इट. एप्पल, देखो एप्पल कारप्ले के बारे में बात कर रहा है और उसके नीचे आ रहा है उसका फाइनेंशियल डेटा. क्या है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टर टू के 2025. क्वार्टर टू अब तो खत्म हुआ भी नहीं वैसे, लेकिन क्वार्टरली अर्निंग से अच्छा है रहेगा. हम क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट, ये रियल टाइम एनुअल रिपोर्ट है एप्पल के 2014 की. लेट अस जस्ट डाउनलोड इट. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं? किसके लिए बनाए जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सभी स्टेक होल्डर्स के लिए. फॉर एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ लुक. अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्लासरूम में बैठ के हैदराबाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एप्पल देख रहा हूँ. तो ये जब बना रहे थे ये लोग सोचे थे क्या हम ये इन लोग के लिए बना रहे हैं? हम सबके लिए बना रहे हैं. anyone who is a stakeholder in Apple, anyone who is interested in Apple can go and have a look at it. And we are having a look at it. Annual report pursuant to the Section 13 Securities Exchange Act 1934. Apple नाम है यार. देखो Apple एक अच्छी डिजाइन कंपनी है ना. Yes or no? They are defined for their particular design, their way of showing off things. Yes or no? लेकिन यहाँ पे जब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इट्स ओनली व्हाइट एंड ब्लैक, नथिंग एल्स. रिपोर्ट तो अच्छा बना सकते थे ना भाई. एटलीस्ट ये एप्पल का लोगो थोड़ा कलरफुल बना सकते थे, लेकिन नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू. क्योंकि ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. एवरी कंपनी हैज टू मेक द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन दिस फॉर्मेट ओनली. एवरी यूएस कंपनी हैज टू मेक इन दिस फॉर्मेट ओनली. बिकॉज क्यों? ताकि ये कंपेयर हो सके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. Just see here, ये पूरे what is the business, what are the risk factors, unresolved staff comments, cyber security properties, etc etc. यहाँ पे आता देखिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दिस आइटम नंबर 8. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, मतलब ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी भी है. क्यों? ताकि लोग इन्वेस्ट कर सके इसमें. एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नेट सेल्स कितना है एप्पल का इन मिलियंस? 294,866 मिलियन है वो. ओके, दैट्स देयर प्रोडक्ट रेवेन्यू इन मिलियंस. तो समझ सकते हैं ना आप, वो ट्रिलियन में ही जा रहा हो. At the end of the day, basic earnings per share is $6.11 per share. वो कितने शेयर रहेंगे वो देखना. Earnings per share and shares used in computing earnings per share. देख लो कितने shares हैं उनके. 15,343,783. Anyhow, यहाँ पे मेरे को आपको बताना नहीं है कि क्या बोलते हैं इसको, क्या चीज है. But the thing is, what I'm trying to say is, this is how the financial statements are made. Okay, let's get back. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मालूम होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द बिजनेस फाइनेंशियल स्टैंडिंग. क्या शो करता है ये? फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी राइट नाउ. कैन यू प्लीज रीड इट अगेन? The statement of financial position shows the business financial standing at the end of the accounting period. This includes assets and liabilities such as land, building the business controls, equipment and motor vehicles needed for operation, goods not yet sold. Excuse me, sir, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर. Money owed by customers, money owed to suppliers, tax on entities, business profits owed to authorities. Then someone said something. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी सर. अरे नहीं, वो मेरी आवाज थी भी नहीं. अच्छा अच्छा. तो आपको पढ़ना है तो आपको खुद भी पढ़ना है ना वो, तो इसलिए वो आवाज की जरूरत है भी नहीं. So basically, this shows a snapshot of the business. What does it? What shows that? Statement of financial position. Statement of
फाइनेंशियल पोजीशन, आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या शो करता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? अ स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेस, अ स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इतना लिख लो काफी है, आगे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। अ स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है? जो बिजनेस के एसेट्स है, जो गुड्स या फिर जो आर्टिकल्स है जो बिजनेस में यूज होते हैं। ठीक है, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर बिजनेस का एसेट है, ये यूज हो रहा है, वो भी एसेट। अगर आप बेचने वाले हैं तो वो एसेट में नहीं आता, वो करंट एसेट में आता, थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। ले सकते हो, यस। यस, कंपनी के नाम पे अगर है तो, पर्सनल नाम पे है तो नहीं। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो ले लेते, अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो फिर नहीं ले सकते। ऐसा नहीं, अरे भाई तुम गाड़ी बचाने पे कहीं जा रहे हैं अभी। जाएंगे तो बस कंडीशन तो। फायदा किस में रहता मालूम? अगर आप एक स्मॉल बिजनेस अभी स्टार्ट करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा जैसा आप ग्रो करें, ज्यादा लोग हो रहे, ज्यादा कंप्लायंसेस हो रहे, तब जाके आप कंपनी बनाते। डे वन में जाके चलो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी स्टार्ट करेंगे बोलते नहीं होता वैसा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, यू स्टार्ट स्मॉल एंड देन यू गो बिग। या फिर आप बहुत बड़ा स्टार्टिंग में ही शुरू कर रहे हो तो यू शुड बी रेडी विद एवरीथिंग। है तो खाली अपने जेब से ही पैसा खर्चा करना रहता, उसको बोलते हैं बर्निंग। और वो बर्निंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। When they start small and then they grow big. They don't start big. Most organizations, until unless नफील के पास अगर कुछ प्लान है, बड़ा प्लान, तो that can be possible. I can be, sitting back and seeing that that's an example. Otherwise, you go in that way. ठीक है, ये एक स्नैपशॉट बता रहा है बिजनेस के बारे में, आप लोग को इतना समझना जरूरी है। बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होता बैलेंस शीट में। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट। इसमें क्या हो रहा है? आपके रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, इनकम क्या है मालूम हो रही, एक्सपेंसेस क्या है मालूम हो रहा। इनकम माइनस एक्सपेंसेस आपका क्या बना? प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से आप क्या मालूम कर रहे कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड देन ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो आप कर रहे हैं वो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। जो अबनॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता, कुछ अलग काम कर रहे हैं आप, तो वो आता कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? Regular course of business, regular activities, profit and loss account, sales minus expenses. Not regular course of business, it comes under other comprehensive income. फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग जो है सो कुछ पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ से यूएस को या फिर यहाँ से कनाडा को, या फिर हम कुछ जो है सो खरीद फरोख्त कर रहे हैं और खाली एक्सचेंजेस हो रहे हैं, तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ मनी इज एक्चुअली अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑल टुगेदर। तो हम उसको स्टेटमेंट, रेगुलर स्टेटमेंट में प्रॉफिट में नहीं डाल सकते, वो अदर कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब जैसे कि एक्सचेंज रेट बदला, एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से अपने को फायदा हुआ, तो अपन कुछ चमत्कारी काम करें नहीं जिसकी वजह से अपने को फायदा हुआ। दैट्स एन एक्सटर्नल थिंग ओनली हैपनिंग, सो दैट कम्स अंडर other source of income, other comprehensive। ठीक है, लिख लो, लिख लो what I am saying, that you write down, what's written you can read it anywhere। Statement of financial position gives a snapshot of the business of assets and liabilities। Statement of profit and loss account gives us profit or loss for that particular period। Other comprehensive income comes with some other course of activities, not comes under regular course of activities। खाली आप इतना लिख लिए तो काफी है।
समझो और लिखो, देख के लिखना जरूरी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग? रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्यों बनाते हैं हम लोग? नॉट सो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर हम लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में चाहता। अगर आप जो है अगर आप खुद उसमें काम कर रहे हैं तो you are still working in purchase and sale of land, then that makes sense ना, क्योंकि आप खरीद रहे land with the scope of appreciation in that only. अब जैसे कि you are doing purchase and sale of something across India, across another state, exchange rate is not under your control. Now, you are not purchasing something with a scope that okay इसका rate बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा बोलकर, so that does not come under scope of regular scope of business. अब लैंड आप अगर सपोज ऐसा काम कर रहे हैं कि जैसे कि यू आर बाइंग इट विद एन इंटेंशन दैट द रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। अब यहाँ पे और एक चीज है, अगर सपोज आप एक नॉर्मल अलग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आई एम इनटू टीचिंग एंड ट्रेनिंग कोचिंग, अब मैं यहाँ पे कुछ लैंड खरीद के बेच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वो, देन दैट कम्स अंडर अदर कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस। दूसरा काम दैट कम्स अंडर दैट प्रॉफिट एंड लॉस में सेम बिजनेस में। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर यू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब चीजें तो ठीक है भाई, लेकिन कैश का क्या फ्लो हो रहा, कैश या अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? अब जैसे कि कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जिसके पैसे मिलने वाले रहते हैं, क्रेडिट पे भी कारोबार होता है, मालूम है ना आपको। अब वो क्रेडिट का कारोबार क्या है, अकाउंटिंग में तो लिख लेते हैं, लेकिन कैश आया या नहीं आया वो मालूम करने के लिए हम लोग अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। व्हाट डू वी मेक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड दैट्स व्हाट इट इज, जो कैश का एक्चुअल इफेक्ट मालूम कराते हैं आपको। मालूम है ना आउन तुमको ये? यू रिमेम्बर? तुमको तो याद होना चाहिए। And the statement of changes in equity, non-financial reports, changes in equity is again another chapter which is going to come. लेकिन होता क्या, आपके जो पैसे है, आपकी जो इक्विटी है वो अभी कितनी है और आखिरी में कितनी होगी, उसके चेंजेस उसमें क्या हुआ, statement of changes in equity. Anyhow, we are going to study that further as well. And same goes with annual reports. Annual sorry, non-financial report. Non-financial report को थोड़ा सा और यहाँ पे हम देखेंगे। This is Apple's annual report. Annual report के इंडेक्स में देखो क्या क्या है यहाँ पे। What are they talking about? What is their business, risk factors, unresolved staff comments, cyber security, properties. तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल स्टफ हो गया ना ये। Is it related to finances? No, it is non-financial. Then here comes financial statements. जैसे कि देखो changes in hand disagreements with accountants on accounting and financial disclosures, controlling, directors, executives, corporate governance, ये सब क्या हो गया, non-financial, but still that comes under the reports. और इसके अंदर financial statements के अंदर क्या क्या आता, let me just show that to you. Financial statements के अंदर statement of balance sheet, statement of financial position, statement of profit and loss, and cash flow statement कहाँ गया आपका ये? देखो, what all we have, consolidated statement of operations, statement of comprehensive income, balance sheet. Balance sheet is basically statement of financial position. Then shareholders equity, changes in equity, cash flow statement, notes to financial statements, reports to independent registered public accounting firm. Everything put together is in here. ये आपको समझना जरूरी है और ये वक्त के साथ साथ समझेंगे। It is just an introduction of financial accounting today. Furthermore, कल जब हम क्लास में आएंगे तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर जाएंगे, डेबिट क्रेडिट पे बात करेंगे। ये एक ओवरव्यू था and I hope that you guys have got some clarity about what it is. Yes or no? ठीक है? So what we'll do right now is we'll pause our session for the day and resume back tomorrow. What time? Tomorrow what time?
9:30 we will resume back tomorrow. Okay, let's pause our session for the day.